ପିଲାମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ତୁମ ଇଂରାଜୀ ବହି ଜସ୍ମିନର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରର ଯାହା ଅଛି ଦ ଡେ ଦ ରିଭର ସ୍ପୋକ୍, ଏହି ଚାପ୍ଟରର ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାରେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଜାହ୍ନବୀସ୍ ଡ୍ରିମ୍ ୱାଜ ଇଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ହର, ହ୍ୱାଇ। এবং 2 নম্বর প্রশ্ন রয়েছে ডু ইউ থিঙ্ক দ্য রিভর ক্যান হেল্প হর ইন ফুলফিলিং হর ড্রিম, হাউ। তবে আস আমি এই দুইটি প্রশ্নর উত্তর কেমিতি হব দেখি নেবা। 1 নম্বর প্রশ্ন, হোয়াট ওয়াজ জাহ্নবীস ড্রিম, ওয়াজ ইট ইম্পর্টান্ট টু হর। আনসার হব জাহ্নবীস ড্রিম ওয়াজ টু গো টু স্কুল অ্যান্ড লার্ন লাইক হর ব্রদার্স। ইট ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টান্ট টু হর বিকজ শি ওয়ান্টেড টু রিড, write and know the answers to many questions in her mind. 2 number question ଅଛି, do you think the river can help her in fulfilling her dreams, how? এর answer হব the river could not directly take her to school but it gave her courage and confidence. It encourages Jahnavi to overcome her fear and try attending school on her own. Thus, the river played an important role in motivating her to fulfill her dream. এরপরে ଆମେ 6 নম্বর পৃষ্ঠাରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିର ଉତ୍ତର କରିବା। 1 নম্বର ଅଛି complete the table given below with Jahnavi's question in column 1 and the reverse answer in column 2. Check your answer with the teacher. ଦେଖ କଲମ 1 ଜାହ୍ନବୀର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଏବଂ କଲମ 2 ରେ ରିଭରର ଆନ୍ସର ଦେଇଛି। ଆମେ ଯୋଉଠି ଜାହ୍ନବୀର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ସେଠାରେ ରିଭରର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ଏବଂ ଯୋଉଠି ରିଭରର ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ତାର ବାମ ପଟେ ଜାହ୍ନବୀର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ତେବେ ଆସ এই 1 নম্বର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ଦେଖ କଲମ 1 ରେ ପ୍ରଥମେ ଜାହ୍ନବୀର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି why the moon always comes from behind the hills. କଲମ 2 ରେ ରିଭରର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା it goes down towards the sea, I have seen. It always takes the same way over the mountains and down the sea like me. Next ଆମେ ଲେଖିବା ଆନ୍ସର ରହିଛି little girls can do as much as little boys. ଏଠାରେ ଆମେ ଜାହ୍ନବୀର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବା can I do something. ତାପରକୁ ଜାହ୍ନବୀର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଲମ 2 ରେ ରିଭର ଆନ୍ସର ଦେଇଛି। ରିଭର ଆନ୍ସର ଅଛି ବିଗ୍ ବୋଟ୍ସ so big that they can take hundreds of people and they sail along the sea with lights that shine all night. ଆମେ ତାର ବାମ ପଟକୁ ଜାହ୍ନବୀର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବା what are ships ଏବଂ ଶେଷରେ ଜାହ୍ନବୀର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି will they come here. ଆମେ ଏଠାରେ ନଦୀର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା I am afraid not too large. You know Chandu's catamaran is good enough for me. Chandu can take you to see a ship someday. Next 2 number ଅଛି the following persons and the river help Jahnavi to go to school, how. ତାର person and river ଦେଇଛି river, teacher, parents, herself, Jahnavi। ସେମାନେ କିପରି ଜାହ୍ନବୀ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାହା এই ଟେବୁଲରେ ପୂରଣ କରିବା। ତ ଆସ এই ଟେବୁଲର ଉତ୍ତର ଆମେ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ରିଭର, ମୋର ହାଉ ତଳକୁ ଲେଖିବା ଏନକରେଜଡ ଜାହ୍ନବୀ ଟୁ ବି ବ୍ରେଭ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ଦେନ୍ ଟିଚର, ଟିଚର ଡାହାଣ ସାଇଡକୁ ଲେଖିବା ୱେଲକମଡ ହର ଇନ୍ କ୍ଲାସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋକ ଟୁ ହର ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ପରସୁଏଡେଡ ହିମ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଜାହ୍ନବୀ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ, ତାର ଡାହାଣ ପଟକୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଫାଇନାଲି ଆଗ୍ରିଡ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟେଡ ହର ଡିସିସନ ଟୁ ଷ୍ଟଡି। ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଅଛି ହରସେଲ୍ଫ ଜାହ୍ନବୀ ଏବଂ ତାର ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଗ୍ୟାଦର୍ଡ କରେଜ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୁଭଡ ହର ଡିଟରମିନେସନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଥିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ।
read the extracts given below and answer the question that follows. एठारे गोटे छोट पैसेज देइछि जहाँ तुम पढ़ी आसिल से पैसेज देइछि और से पैसेज आधार रे चारोटी क्वेश्चन देइछि आमे से चारोटी क्वेश्चन रो उत्तर गोटे गोटे आलोचना करिबा. फर्स्ट क्वेश्चन आंसर लिखिबा द टोन ऑफ द रिवर in the given extract is assuring. Second question रही select a phrase from the extract which shows that Jahnavi was a frequent visitor to the spot. यार आंसर लिखिबा फ्रेज हेउची when you have been coming here to see me every day. Well, almost every day. Third question रही choose the correct option to complete the sentence. The use of an exclamation mark at the end of the line. It could not be the river expresses लिखिबा D number disbelief. एवं शेष क्वेश्चन रही choose 3 qualities of the river highlighted in the extract from the words in the box given below. यार आंसर लिखिबा the qualities of the river affectionate, thoughtful, third रहबो kind hearted. नेक्स्ट 2 नंबर मध्य सेपरी क्वेश्चन देइछि आमे प्रथमे पैसेज टी पढ़िबा एवं तापरे जे क्वेश्चन गुडी देइछि सेही क्वेश्चन उत्तर गुडी गोटे गोटे आलोचना करिबा. फर्स्ट क्वेश्चन रही कंप्लीट द सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट रीजन. अकॉर्डिंग टू द रिवर देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज बिकॉज यार आंसर आम लिखा अकॉर्डिंग टू द रिवर देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज बिकॉज दे कैन डू द सेम थिंग्स इक्वली वेल लाइक स्विमिंग एंड लर्निंग. सेकेंड क्वेश्चन गोटे स्टेटमेंट देइछि यह ट्रू कि फॉल्स पचारछि. द रिवर एनकरेजेस जाह्नवी टू हैव फेथ इन हरसेल्फ एंड फुलफिल हर डिजायर टू गो टू स्कूल. यह ट्रू. थर्ड क्वेश्चन अछि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. व्हेन द रिवर सजेस्ट दैट जाह्नवी शुड स्लीप अलोंग इट मीन्स दैट शी शुड मूव. यार आंसर हम सी क्वाइटली. 4 नंबर क्वेश्चन अच्छी व्हाट डज द रिपीटेशन ऑफ द फ्रेज आई कुड नॉट टेल अस. आंसर लिखा द रिपीटेशन ऑफ आई कुड नॉट शोज जाह्नवीज फियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अबाउट गोइंग टू स्कूल. एवं शेष क्वेश्चन अच्छी इन द फ्रेज आई कुड नॉट आई स्टैंड्स फॉर लिखा बी. यार आंसर हम जाह्नवी. देख आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. 1 नंबर ठारू 6 नंबर पर्यंत सर्वमोट 6टी प्रश्न अच्छी आम गोटे गोटे प्रश्न पढ़ा और से गुड़िकर उत्तर लिखा. 1 नंबर प्रश्न अच्छी द राइटर डिस्क्राइब्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर थ्रू डिफरेंट एनिमल्स बर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. दे आर आम आंसर लिखा दे आर ए किंगफिशर, ए ग्रीन लिजर्ड, पैरोट्स, स्नेक्स, स्पाइडर्स, फ्रॉग्स, बैम्बो ट्रीज एंड द रिवर. 2 नंबर क्वेश्चन रही हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जाह्नवी. यार आंसर हम द रिवर न्यू सो मच अबाउट जाह्नवी बिकॉज शी ऑफन विजिटेड द रिवर बैंक, स्पोक हर थॉट्स अलाउड एंड शेयर्ड हर फीलिंग्स देयर. 3 नंबर क्वेश्चन रही जाह्नवी सेज एंड आई एम सो ओल्ड नाउ दे विल नेवर लेट मी गो. व्हाट डू यू थिंक अबाउट. आंसर लिखा जाह्नवी फेल्ट सैड एंड होपलेस because she thought that at her age she should no longer be allowed to join school like the younger children. 4 number why did the river laugh when Jahnavi said she would be scared at school. Answer करिबा the river laughed because Jahnavi was brave in facing snakes, lizards and trains. Yet she was afraid of going to school, which was not dangerous at all. 5 नंबर क्वेश्चन रही व्हाई डिड जाह्नवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस. आंसर लिखा जाह्नवी फॉलोड द रिवर्स एडवाइस बिकॉज शी ट्रस्टेड द रिवर एंड वांटेड टू अचीव हर ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्कूल एंड लर्निंग. 6 नंबर क्वेश्चन रही व्हाट इज द मेन मेसेज दैट द राइटर intends to convey. Answer लिखिबा the writer intends to convey the message that girls deserve equal opportunities in education as the boys
and with courage and determination they can fulfill their dreams despite obstacles. Next question is, let us run. You have learned that naming words are called nouns and only proper nouns begin with a capital letter. Why has the author used a capital letter for the river even when it is a common noun? जेहेतु प्रत्येक प्रॉपर नाउन रो प्रथम अक्षर बड़ होता है किंतु प्रश्न कहूची काहेकि एठारे लेखक रिभर रो प्रथम अक्षर बड़ करछंती जेहेतु रिभर गोटे कॉमन नाउन तार क्लू देइछि हैज द रिभर बीन गिवन क्वालिटीज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग तो आसो आमे यार उत्तर करिबा The author used a capital letter for the river because the river has been given human qualities like speaking, advising, and laughing. It is treated as a character in the story. यहाँ पर देखो प्रश्न अछि there are a few words related to sound in the text. Pick the words from the text and write them next to the correct definition. It made a high pitched piercing sound to cause liquid to strike or fall on something. एबरे अब 7टी हिंट्स देइछि एबे 7टी हिंट्स को देखि आमे यार उत्तर गुडिक लेखिबा एक नंबर थिला मेड ए हाई पिच piercing साउंड यार आंसर हबो shrieked. 2 नंबर अछि टू कॉज लिक्विड टू स्ट्राइक और फॉल ऑन समथिंग यार उत्तर हबो splashed. 3 नंबर अछि ए लो कंटिन्यूअस बैकग्राउंड नॉइज यार उत्तर हबो murmuring. 4 नंबर अछि क्राई विथ लाउड अनकंट्रोलेबल गैस्प यार आंसर हबो sob. 5 नंबर अछि टू मेक ए सॉफ्ट ड्राई साउंड लाइक पेपर और लीव्स मूविंग यार आंसर हबो rustle. 6 नंबर अछि took a short quick breath through the mouth due to surprise, pain or shock यार आंसर हबो gasped. 7 नंबर अछि shaking rapidly to make continuous short sharp sounds यार आंसर हबो rattling. 8 नंबर अछि making a lot of noise यार आंसर हबो noisy. और शेषटी 9 नंबर अछि made a long high cry usually because of pain or sadness यार आंसर हबो wailed. तापर एठार अछि नाउ fill in the blanks with suitable sound words from exercise 2 अर्थात exercise 2 रे आमे जेउ साउंड गुडी को लेखिले सेथि मधुर एठी गोटे गोटे एठारे पूर्ण करिबा एठी सर्वमोट 6 टी ब्लैंक देइछि आमे सेठी जो 9 टी लेखिले हिंट्स रु आमे शब्द गुडी को लेखिले एठु गोटे गोटे एठारे पूर्ण करिबा फर्स्ट ब्लैंक रे हम लेखिबा नॉइजी सेकंड ब्लैंक लेखिबा रसेल्ड थर्ड ब्लैंक लिखिबा gasped, फोर्थ ब्लैंक लिखिबा wailed, फिफ्थ ब्लैंक लिखिबा murmuring और सिक्स्थ ब्लैंक लिखिबा shrieked. तो अछि the word catamaran is used in the text. The word originates from Tamil language. अर्थात catamaran word टा तमिल लैंग्वेज आसीछि जोथि तमिल लैंग्वेज होछि काटू मारम मीनिंग टायर्ड वुड से भाबे एठारे केति गुडे वर्ड देइछि फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फ्रॉम व्हिच इंडियन लैंग्वेज दिस वर्ड्स वे आर बोरोड एन एग्जांपल हैज बीन गिवन अर्थात दिस कर्म ये संस्कृत वर्ड आसीछि सेमति साहिब चुटनी गुरु बेरंडा जंगल पालन क्वीन ये सब केउ लैंग्वेज रु आसीछि आमे एगुडीर उत्तर लिखिबा तो आसो एगुडे उत्तर लिखिबा कर्मर मीनिंग है रिजल्ट ऑफ योर एक्शन या संस्कृत वर्ड आसी साहिब मीनिंग है वर्ड फॉर सार या उर्दू वर्ड आसी चटनी यार स्पाइसी सॉस या हिंदी रू आसी गुरु गुरु मीन्स टीचर या संस्कृत रू आसी बेरेंडा यार मीनिंग है रूफ्ड पोर्च या हिंदी रू आसी जंगल जंगल मीन फॉरेस्ट या हिंदी बा संस्कृत रू आसी शेष पालान क्वीन या संस्कृत वर्ड रू आसी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एठारे चारोटी प्रकार बोट चित्र अच्छी कानोए काटामरान कोराकेल शिकारा इज व्हिच वन वुड यू लाइक टू ट्रैवल इन तो आसो आमे यार उत्तर लिखिबा प्रश्न थिला व्हिच वन वुड यू लाइक टू ट्रैवल इन यार आंसर तुमे लिखिबो आई वुड लाइक टू ट्रैवल इन शिकारा किमा तुमे चाहिए या बदले तुमे जे कोनसी गोटे बोटर ना लिखि पार
এটা ତାହା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ରହିଛି मेक ए कलरफुल ड्राइंग ऑफ ए बोर्ड दैट यू वुड लाइक टू ट्रैवल इन। ତମେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡର ଚିତ୍ର କରିବ ଯୋଉଟା ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ। यहाँ पर देखो सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन वर्ड्स रिलेटेड टू वाटर ट्रांसपोर्ट। अर्थात जल रे आमे जीवा आसीबा पई व्यवहृत करूथुवा केतेक जो जान को बा जलजान जोटा कहबा जेमति बोट शिप एई भली जेते प्रकार अछि ताकू आमे एठी गोटे गोटे पूर्ण करिबा। से पई एठी हमकु हिंट्स देइछि 1 रु 7 पर्यंत हिंट्स देइछि एवं सेही हिंट्स गुडी को पढी आमे सेही जलजान गुडीकर नाम गुडिक ए पजल ले लिखिबा। क्लास आमे गोटे गोटे हिंट्स पढिबा एवं तार कोन पजल ले किपरि पूर्ण करा जिवो आस से पजल टी को पूर्ण करिबा। पिला माने एहा हेउची से पजल आंसर। 1 नंबर लिखिबा शिप, 2 नंबर शून्य स्थान जाय लिखिबा बोट, 3 नंबर शून्य स्थान जाय लिखिबा राफ्ट RAFT, 4 नंबर शून्य स्थान रे आमे लिखिबा स्टीमर, 5 नंबर शून्य स्थान लिखिबा कानोए, 6 नंबर शून्य स्थान लिखिबा टग बोट एवं 7 नंबर शून्य स्थान लिखिबा याच। यह होची तुमर जो 7टी हिंट्स देइथिला 7टी हिंट्स अनुसार पजल रो आंसर। एठारे 6टी पिक्चर देइछि तुमको कहिछि यूज ऑफ प्रीपोजिशन। अर्थात प्रीपोजिशन यूज करे जेमति इन ऑन अंडर बिलो ए भली प्रीपोजिशन व्यवहार करिवो। देखो मोट ऊपर चित्र गुडी अछि गोटे टेबुल अछि बॉल गोटे बैट गोटे कैट गोटे डॉग गोटे एप्पल गोटे ट्री रो चित्र अछि। आमे ए चित्र को देखि आमे प्रीपोजिशन व्यवहार करी सेंटेंस गुडी को लिखिबा। तो आस या किपर लिखिबा आमे जानि नबा। देखो पिला माने मु एठारे फास्ट चित्र पई लिखि देइछि 5टी लाइन। तुमे अन्य गुडी एई भली भाबरे करिवो। फास्ट लाइन देखो द बैट इज ऑन द टेबल, द बॉल इज ऑन द टेबल, द डॉग इज अंडर द टेबल, द कैट इज नियर द ट्री, द एप्पल इज ऑन द टेबल। एई भली भाबे 5टी लाइन को फॉलो करी तुमे अलगा जो 5टी चित्र देइछि सेति पई प्रत्येक पई 5टी लेखाय धाडी लिखिबो। पर आसो बी नंबर क्वेश्चन देखिबा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रीपोजिशंस गिवन विद इन द ब्रैकेट। क्लास कोन प्रीपोजिशन लागिबो जहा ब्रैकेट देइछि केउंट लागिबो हम देखिबा। जाह्नवी टेक्स द रिवर्स एडवाइस एंड गोज टू स्कूल ऑन हर फर्स्ट डे। एडिटा व्यवहार करे 8 एट लिखिबा 8 फर्स्ट डे एट स्कूल। जाह्नवी टूड नर्वसली इन देइछि आउटसाइड देइछि एबव देइछि हम एटा आउटसाइड लिखिबा। एटारे लिखिबा आउटसाइड। द गेट क्लचिंग और बैग क्लोज टू हर। द बेल रैंग एंड सी हरीड। एट आउटसाइड अछि थ्रू अछि इनसाइड अछि हम एटारे इनसाइड लिखिबा। 3 नंबर डैश रे हम इनसाइड लिखिबा। द बस्टलिंग क्लासरूम सी फाउंड ए सीट तापर एठी एमंग अछि बिटवीन अछि फ्रॉम अछि एठी हमें बिटवीन लिखिबा। बिटवीन टू फ्रेंडली क्लासमेट्स द टीचर ग्रीट देम वार्मली एंड स्टार्टेड द लेसन। एठी लिखिबा अबाउट नंबर्स। जाह्नवी लिसन्ड अटेंटिवली फीलिंग एक्साइटेड एठी मध्ये से अबाउट द न्यू एडवेंचर अहेड। Next, read the highlighted words in the following sentence from the text. A kingfisher swept down its wings, an arrow of blue in the sunlight. Words like on, off, down can function both as preposition and as adverb particle. Later example देखो she ran up the stairs. It is preposition. Up टा होची preposition. She rang me up. Up होची adverb. Remember, a preposition is usually followed by an object, a noun, whereas an adverb will tell you more about the action or verb. ताले आसो जा प्रश्न गुडिया देइछि आमे जा हिंट्स देइछि से अनुसार पूर्ण करिबा। देइछि द कैट जंप्ड dash the table. It preposition लगे कहिछि हमें लगे on. The cat jumped on the table. The children played
डैश अंटिल डार्क ये एडवर्ब लगे कही लिखे आउटसाइड OUTSID आउटसाइड सी क्विकली रैन डैश देछि द पार्क प्रिपोजिशन लगे कही लिखा टू द हेलिकॉप्टर वाज होवरिंग डैश एडवर्ब लगे कही ये लिखा एबव ABOVE एबव नेक्स्ट अच्छी वी वर जस्ट वाकिंग डैश चैटिंग ये एडवर्ब लगे कही लिखा एलॉन्ग ALONG एलॉन्ग 6 नंबर अच्छी आफ्टर थ्रूली विपिंग हि शूज हि स्टेप्ड एडवर्ब लगे कही हि स्टेप्ड आम लिखा इनसाइड SID सी ड्रोव स्लोली डैश द शार्प कर्व प्रिपोजिशन लगे कही लिखा अराउंड AROUND नेक्स्ट अच्छी ही प्लेस्ड द कीज डैश द मैट बिफोर लिविंग प्रिपोजिशन लगे कही आम लिखा ऑन तापर देछि read the words given in the box below you will listen to 5 people speak about school life as you listen circle the words that are used by the speakers there are 2 words you do not need transcript for the teacher on page 40 40 पेज रे 40 नंबर पेज रे देखिबा जो विषयटी पढ़ी आम एटी को वर्ड पाउचे ताकू लिखिबा आम एटी पाइबा होम मेकर पाई परिबा तर प्रिंसिपल पाई परिबा नेक्स्ट कैरियर पाइबा एवं बुक्स मध्य पाइबा एगुलो आम गोल करिबा तापरे क्वेश्चन अछि you will once again listen to 5 speaker as you listen match each statement 1 to 7 to each speaker I to V there are 2 statements that you do not need देखो एठारे 7टा स्टेटमेंट रही वो एठार स्पीकर नंबर पकेबे कही तुम 40 पृष्ठार पढ़िले जानिबो से 5 जण स्पीकर कथा होइसंती से 5 जनकर किए को स्टेटमेंटा कही आम एग्नेस्ट घर लिखा कि 2टी स्टेटमेंट कहीं कही ना ताले प्रोमोट एक्टिविटीज पार्टिसिपेशन फॉर ऑल इन स्कूल एक्टिविटीज आ केते नंबर स्पीकर कही 5 नंबर स्पीकर कही तुम ये भी लिखा कमेंट्स ऑन हाउ स्कूल मेक्स लर्निंग मैथमेटिक्स जॉयफुल आपको कहीं कही ना ये छाड़देबा बिलीव्स इन द पावर ऑफ एजुकेशन दैट लीड्स टू फ्रीडम ऑफ चॉइस आपको प्रथम स्पीकर कही नेक्स्ट अच्छी शेयर्स दैट स्कूल ऑल्सो मीन्स चैंपियनशिप आपको 4 नंबर स्पीकर कही अंडरस्टैंड दैट बॉयज एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट एबिलिटीज ये कहीं कही ना आपको छाड़देबा persuades the parents to grant permission to attend school सॉरी ये 3 नंबर तो 2 नंबर स्पीकर कही 6 नंबर 1 नंबर स्पीकर कही 7 नंबर अच्छी believes that learning skills is not gender based आपको 3rd नंबर स्पीकर कही तेणु ये 6 नंबर सीधा खाली घरे आई लिखा 3 नंबर पाखे लिखा 2i लिखा 7 नंबर पाखे 3i 4 नंबर पाखे IV लिखा 1 नंबर पाखे V लिखा पिला माने यह परठू आउ जहाँ क्वेश्चन वीडियो रही तुम क्लास वर्क रही तुम टीचर सहायतार तुम ये वीडियो क्लासरूम रे केवल प्रैक्टिस कर पढ़ा सहित प्रैक्टिस कर खातार कर किसी आवश्यकता पड़ो ना यह केवल टीचर साहाय्य तुम प्रैक्टिस कर पढ़ तेणु पिला माने आज आमर ये क्लासटी ये सरी जाइए जदि तुमको आज ये क्लासटी भल लगी थाए तेरे तुम यहाँ लाइक करने सहित तुम सांग मान सहित शेयर कर जदि एपर्यंत सुधा तुम आम चैनल को सब्सक्राइब करना था तेरे यहाँ तुम यथाशीघ्र सब्सक्राइब करनेब जहाँफल परवर्ती समय जो वीडियो गुड़िक अपलोड कर नोटिफिकेशन तुम यथाशीघ्र पाई जाई पार कमेंट बॉक्स रे तुम मतामत देवाक आदौ भूल ना तुम मतामत अपेक्षा रही पुणी देखा आउ एक नुआ वीडियो रे आज रोची धन्यवाद।